हाउ टू मेक गट्टे की सब्जी, हाउ टू कुक गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी कैसे बनती है। मैंने तो अपने सासू माँ से बोल दिया, मम्मा गट्टे की सब्जी की रेसिपी बताओ। अब बनाना पड़ेगा ना मुझे, मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया। Ever since I've come into this household, family, of course my mother-in-law's non-vegetarian food has been fantastic, but I equally love more her vegetarian food, right from her moong dal to the bhindi, the way she makes the bhindi, and so effortlessly. So I'm going to push her to give us at least one vegetarian recipe. Mama, gatte ki sabzi, wo बताइए। गट्टे की सब्जी गट्टे की सब्जी ये ऐसे बनती है कि इसमें बेसन के लेते हैं, फिर उसमें डालते हैं, उसको गूंथते हैं आटे की तरह। लाइक इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, अच्छे से हल्दी ताकि पीला सा रहे, एंड मोटी इलायची का दो तीन कम से कम मोटी इलायची के दानों को अच्छी तरह पीस के क्रश करके उसमें आप मिलाएंगे, और ऑयल डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ज़रा सा पानी, थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से उसको गूंद देंगे। उसका डो बना के देन आप उसको पहले तो आप बॉईल कीजिए, बॉइल्ड वाटर में आप डाल दो उसको, ठीक है। वो हो गया, उसके बाद 10 मिनट बाद उसको निकाल के आप रख लो। उसके तो वो बॉइलिंग वाटर में डालने से वो मतलब नहीं होगा। उसके बाद अच्छी तरह वो हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, फिर आप निकाल के 5-7 मिनट 8 मिनट के बाद आप उसको पीसेस कर लीजिए इतने बड़े, राइट। उसके बाद आप उसको फ्राई कीजिए, फ्राई करके निकाल लीजिए। फिर आप बनाइए दही और टमाटर का पेस्ट, वो उसमें डाल के थोड़े से खड़े मसाले डाल दो, लौंग इलायची वगैरह डाल के, तेज पत्ता वगैरह इसमें नहीं पड़ता, ओनली लौंग एंड इलायची, जीरा नहीं, जीरा नहीं, लौंग एंड इलायची पड़ती है। उसके बाद उसको आप पेस्ट डालिए, पेस्ट को अच्छी तरह भूनिए, टमाटर एंड दही का पेस्ट अच्छे से होना चाहिए, वो उसको डालिए। फिर जब वो खोलने लगे तो फ्राई किए हुए आप गट्टे उसमें डाल के उसको 10 मिनट पकाइए। इसको वेरी इजी। बस तो वो दही वो नहीं हो जाता, उसको चलाते रहिए आप, अच्छा, चलाना जरूरी है, और धीमी आंच। और दूसरे टमाटर भी पड़ेगा ना बीच में, तो इतना वो नहीं होगा। और धीमी आंच खाली आप दही, हाँ धीमी आंच तो पकेगा, लेकिन उसको अगर आप दही के संग, टमाटर के संग दही को पेस्ट बनाएंगे, तो इतनी जल्दी इसमें वो पड़ता नहीं। अच्छा, ओके, पेस्ट अच्छा बन जाता है। ओके, ठीक है, ये ट्राई करेंगे हम। ट्राई करना, फिर मुझे खिलाना और बताना। ठीक है। वैसे है तो बढ़िया चीज़ गट्टे की सब्जी, गर्मियों की मौसम है, वही रोज रोज लौकी भिंडी, बेसन क्यों ना खाए। बेसन के रोल्स बनाओ, पानी में डालो दही और टमाटर की ग्रेवी, एंड दैट्स इट। So simple. That's what my mother-in-law said. Now let's see how it really works. So the first thing that we're going to do is make the besan ka dough. Besan is gram flour and very widely used across India, as all of you must be knowing. What goes into the dough is a little bit of yogurt to keep the dough soft, and oil and a little bit of water and some ilaichi, badi ilaichi powder. Badi ilaichi is these large cardamoms, these big black cardamoms, which I'll be taking the seeds out and pounding them and adding to the dough, the batter. तो अब हम बेसन को गूंदेंगे, थोड़ी सी पानी, दही और ये बड़ी इलायची के दाने कूट के। इसमें थोड़ा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर उसका आटा बनाएंगे। जो सूखे चीज़ है उनको पहले अच्छे से मिला लें। Mix the dry ingredients nicely so that you don't have concentrated parts when you put in the liquids. So the salt, haldi, hing,
Everything is mixed evenly, including those elaichi danas. I will add a little oil, just a little, probably a couple of teaspoons full, because you just want to keep it soft. And now we will add the dahi. I think about 1 tablespoon should be enough. The next thing I have to do is add water, but before adding water I'm going to add the whey from the yogurt so that it is a little more tasty than water. Gatte Ki Sabzi is traditionally made in Rajasthan, but my mother-in-law told me a variation which probably comes from her area, which is UP. As you know, Amit's ancestral roots are actually in UP, even though they are from Punjab. So this is the UP style of Gatte Ki Sabzi. So while I'm rolling out these things, I've got a pan on the gas with some water which is going to come to a boil. Once it comes to a boil, these tubes are going to go in there to boil, to cook. So this is actually very close to a pasta. You know how you make pasta, except for in pasta you will add eggs. In this you've added dahi, and in pasta you use all-purpose flour. Here you're using gram flour. And then of course the gravy is also tomato and yogurt and tomato and cheese. So how different are we from the Italians? मैं इनको इसलिए छोटे कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो वो डेगची में फिट नहीं आएंगे. So I've taken around 3 tomatoes and about 4 tablespoons of yogurt to make the puree, and if I need yogurt more later on, I can always add it. तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 3 चम्मच दही लिए है और इसका मैं अब पेस्ट बनाऊंगी मिक्सी में. तो अब ये अच्छे से उबल रहा है और इसमें मैं इनको डालूंगी. हे भगवान प्लीज मत तोड़ना. एक तो नहीं टूटा, दूसरा भी नहीं टूटा. I am now adding these rolls to the hot boiling water and they are going to cook. They're supposed to rise to the top. I guess that will happen when they cook. I shall not overcrowd them. So that is boiling, cooking, and I am what a pretty pink color. Did you see that? Oh, it's getting darker. Ah, they have risen. They have risen. What fun. Okay, I'm on my way to making Gatte Ki Sabzi. Don't they look like sausages? You think I can, sort of fool Amit into thinking this is non-vegetarian Italian dish? So these are kind of done. And I'm gonna fish them out. Can I tell you a secret? I was so terrified of making this Gatte Ki Sabzi because I'd never made it before in my life that I was actually considering asking my neighbor who's from Rajasthan, and she cooks this almost every other day, to come and do it for me. But
I managed और am managing. तो अब ये जो लंबे लंबे हमने उबाले हैं गट्टे, उनको छोटे छोटे काट के, ताकि वो खाने में आसान हो और पकाने में भी आसान हो, इनको हम काट के हल्के से तेल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे. आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं, उससे स्वाद शायद ज़्यादा बढ़ेगा. और अगर चाहे तो ना भी फ्राई करें, मतलब ज़रूरी नहीं है. काफ़ी लोग वैसे ही बनाते हैं बिना फ्राई करके, पर मैं आज फ्राई करके करूँगी क्योंकि मेरी सास ने बोला है. तो गट्टे फ्राई हो गए हैं एंड हल्का फ्राई किया है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा हार्ड नहीं बनने दूंगी. एंड आई एम गोइंग टू बी कुकिंग दिस इन द चट्टी. चट्टी जो मिट्टी की बनी हुई कढ़ाई टाइप है, उसमें मैं बनाऊंगी. नॉर्थ इंडिया में भी मिट्टी के बर्तनों में काफ़ी खाना बनता है. रोटी तो बनते ही हैं, देखा हुआ है मैंने. पर ये हमने केरला में डिस्कवर किया था एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग टू बी कुकिंग योर फूड इन. बहुत स्वाद बनता है. नाइस गट्टे. मिट्टी का बर्तन आग के ऊपर रखने से पहले हमेशा भिगो लेना चाहिए. ये मेरी केरला वाली दोस्त ने बोला है. उससे क्या होता है कि ये बर्तन टूटता नहीं है. तो ये गट्टे की जो ग्रेवी है ये कई तरीके से बनती है. या तो आप सिर्फ दही डाल के बना सकते हैं, या जैसे मैं बना रही हूँ टमाटर और दही के साथ बना सकते हैं. और पंजाब में तो इसमें प्याज अदरक लहसुन भी डलता है. पर आज मैं सिर्फ टमाटर और दही और हल्का सा गरम मसाले का छौंक, बट नो तेज पत्ता. तेज पत्ता वगैरह इसमें नहीं पड़ता. Okay. So the gatte ki sabzi gravy can be done in various ways. You can do it with just dahi. You can do it with tomato and dahi, the way I am doing it today. You can even do it with dahi and pyaz, adrak, lasan, tomato, the way they do it in Punjab. But this is a nice simple way, and there's only a little garam masala in the tempering and no tez patta. I'm going to be tempering it with a few seeds from the big elaichi and a few green cardamom and long. I'm just going to bash these guys up and then add it to the oil. Nicely bash. Oil is hot, as you can see it's bubbling. So this is the water that the gatte were boiled in. It's still got a little quality of the besan, and I'm going to use a little bit of this water in the gravy, so it will kind of thicken the sauce. And I'm going to wash out the curry from the mixie. No waste.
see what this is all about. Real, authentic. Yummy. So if I can do it, you can do it. And what an amazing trip this whole travel diaries has been. So many new recipes and so many new things I've managed to learn to cook. And this is really perfect for afternoon, summer afternoon lunch. And the gattas, it's soft, it sort of melts in the mouth. The gravy is perfect with that tanginess, the sourness of the yogurt and the sweetness of the tomato. Try it, I can't tell you how good it is. बहुत ही बढ़िया बना है गट्टे की सब्जी. अमित खा के तो बोलेगा अरे ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है. गट्टे का जो स्वाद है वो बेसन, इलायची और हींग का मिश्रण एकदम बढ़िया है. और वो ग्रेवी टमाटर और दही की हल्की सी खट्टापन. बना के देखिए, खुद आजमाइए. मैंने इसमें हल्का सा लाल मिर्च और घी का तड़का लगाया है. इससे स्वाद तो बढ़ती है. अगर आपको मिर्ची पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ घी डाल सकते हैं या घी ना भी डाल सकते हैं. और ऑफ कोर्स धनिया, हरी मिर्च तो है ही. सो वन मोर ग्रेट रेसिपी कुक्ड इन द चट्टी. And we cooked another chatti dish, if you remember, which was also from Rajasthan, which was banjara mutton. And if you haven't seen that, go and see it. तो एक और बढ़िया डिश हमने बनाया मिट्टी के बर्तन में, जिसे चट्टी कहते हैं. और इसके पहले हमने बनाया था बंजारा मटन, वो भी राजस्थान का था. और अगर आपने देखा नहीं है और मटन खाना पसंद करते हैं तो प्लीज़ जाके देखिए. So this was it from my mother-in-law for this sojourn of our journey. Hopefully when we go back next there'll be many more recipes coming out from her. तो स्लो फायर शेफ का सफ़र जारी रहेगा और अगले हफ्ते हम आपको मध्य प्रदेश ले जाएंगे. Ba ba da ba da ba da.